Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and this is Operation Strategies Management 6.563, and today we are taking off with another topic, and pretty interesting. I'm pretty excited about it because this is what I have seen in a number of multinationals happening in the past 5-6 years. A number of organizations have been focusing on it. Moving on. For the next lecture, let me just give you the recap that what we did last time. We talked about another important substitute strategy, and that was your lead management. And what we actually talked about was what are the lean operations, hota kya hai, what do we focus in the lean operations, then what are the elements in lean operations. That is basically we are totally against the waste, so waste elimination should be the highest priority. There should be a zero inventory, and we should be giving whatever customer is asking for at the right time, at the right quantity, and we should be meeting his expectations. Now, one was waste elimination, the second one is the behavior, the third one is your synchronization of activities, and the fourth one is your customer focus. Now these are all elements of your lean management. Then we talked about, which is part of your lean management, that is JIT, just in time. We discussed it in quite a stretch, that what kind of strategies are to be applied in terms of the implementation of JIT in any organization, in any operational activity. Later on, we also discussed about Kanban. Kanban is also one of the strategies where we want to have a smooth and sustainable flow of the processes and having a good quality project by the end of the operations. And the last part we discussed was that how your lean management can be applied in terms of your service sector, in terms of the manufacturing sector, what benefits we reap out of it. And in the end, we also looked at lean system ki jo implementation hoti hai, wo kitni important hai, and how it actually improves the productivity and reduces the cost of the organization. And last but not the least, given ke course ka naam hai Operation Strategy, we linked up in the Operation Strategy ke how lean fits into the operation strategy. Now today, again, the same old diagram that has been continuing for the past 3 lectures, I suppose. हमने TQM cover किया, हमने lean cover किया. आज हमारी बारी आती है BPR की, that is your business process reengineering, a very important concept. और ये concept आपको किसने दिया था? Michael Hammer ने दिया था. And Michael Hammer की, before I go into detail, let me just tell you that what today's lecture is about. There is going to be a general gupshup, the general introduction about this concept, then how business process reengineering works, what are the symbols into it, क्योंकि इसमें आपकी वो symbols की काफ़ी ज़्यादा application है, so you need to remember some of the symbols. And how do we implement BPR in any organization, what are the challenges in terms of implementation, और end में as usual the summary of the lecture. Now Michael Hammer US के एक business concern के, he was one of who just ने concept दिया, और BPR आता है आपका 1990s के अंदर, and 1990s के अंदर it created a lot of ripples in the corporate sector. Now what was the concept behind के जो lean management है और TQM है, इसके अंदर we are talking about 10% इतने % change आया. So we have more or less जो हमारी interventions होती हैं, they are incremental interventions. But over here you are actually totally bringing a revolution in the organization. You are making major changes in the organization. So हम कहते हैं 10 times versus 10%. So we don't believe in the small changes जब हम BPR कर रहे थे, बल्कि हम totally revolutionize कर देते हैं सारे processes को, which has given some really good results. अभी मैं आपको examples देता हूँ of organizations which have applied BPR and they got some really good results. अब industrial revolution में जो था हमारा model of organization and production क्या था basically कि complex work has been broken down into simple and repetitive tasks. अगर आप प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखें तो कुछ लोग टेलरिज्म को भी बीपीआर के साथ वो रिलेट करते हैं.
एंड हमने ये कहा कि जी हमने वो थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन और ये सारे कि जो लोग जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट्स हैं वो वही काम करें एंड देन देयर विल बी अ मोर आउटपुट। और इसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, और इससे क्या हो जाती हैं, जॉब्स आपकी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। उसके बाद वन इज़ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड द अदर इज़ योर सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। सीक्वेंशियल प्रोसेसेस इज़ के जो है कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं, गिवन सेंस कि जो जो लोग जिस स्पेशलिस्ट अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, आपस में वो कोऑर्डिनेट करवा देते हैं, उनका एक नेटवर्क बना देते हैं। सो वीविंग हुई, फिर आगे यार्निंग, फिर आगे फिनिशिंग, फिर आगे स्टिचिंग, एंड देन अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी रेडी एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अबाउट इट। सो स्पेशलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, देन योर सीक्वेंशियल इज इंपॉर्टेंट, और फिर हम क्या करते हैं, नैरो डाउन करते हैं जो आपकी टास्क क्या हो रही थी, रेपिटेटिव हो रही होती है, ठीक है। और इन दिस वे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है दैट फंक्शंस। अब इसमें जो मैनेजर का जो रोल है दैट इज बेसिकली टू कंट्रोल द क्वांटिटी, टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू इंश्योर कि जो क्वालिटी है वो आपका अप टू द मार्क हो। अब शुरू में जो मैनेजर का रोल था दैट वाज वेरी डोमिनेंट स्टाइल कि जी ही वुड बी कंट्रोलिंग, ही वुड बी अ टफ मैन, और उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर होती थी वो किसी और की परफॉर्मेंस मेजर करता था, दैट वाज बेसिकली द फाइनेंशियल स्कोर बोर्ड। अब एम्प्लॉयज़ आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ बिजनेस फंक्शन, और जो हमारे स्ट्रक्चर से दे वर वेरी हायरार्किकल, यानी टॉप डाउन, एंड देयर वाज अ कंप्लीट हायरार्की ऑफ द सिस्टम। लेकिन obviously all systems are not perfect. This system also, this traditional industrial revolution का ये जो business model था इसके अंदर भी problems थे। अब problems क्या आ गए कि जो functional departments becomes barriers to change। जब आप specialist हैं और आप अपनी ही एक वो सीक्वेंस के अंदर काम करते जा रहे हैं, तो अब कोई इनोवेशन अगर लानी है तो यहाँ तो फिर सारों में लेके आए, यहाँ फिर एक में लेके आएंगे तो बाकी प्रोसेसेस भी उससे क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। सो देयरफॉर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बिकम बैरियर्स टू चेंज। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज नहीं आ रहा था, एंड द चेंज वाज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ पे क्या आ रही थी, वी सॉ स्टैग्नेशन इन द फर्म्स। देन टू मच टाइम and money is spent in ineffective coordination and communication. As we said, coordination is very important, communication is very important in such manufacturing concerns in the operations. So therefore lot of money and time was being spent on that. उसके बाद जो basically the true thing जो कि customer actually मांग रहा था उसकी तरफ हम नहीं काम कर रहे थे। We were just working on specialist होना चाहिए और आपने अपना output बड़ा अच्छा देना है, क्वालिटी वाला देना है, और जिसकी वजह से अब क्या होना पड़े, आपके जो ओवरहेड्स थे वो इंक्रीज होना पड़े, वेस्ट आपका ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। Then business processes have evolved over the period of time and were not designed to handle changing business environments, और या फिर technologies जो कि नहीं आ रही थी। Given कि we have already developed a business model जिसके अंदर इतनी leverage है ही नहीं है, इतनी capacity है ही नहीं change होने की, so therefore what happened was कि there was no change, but बिजनेस इन्वायरमेंट आपका चेंज होता जा रहा था, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही थी, so therefore आपके जो traditional business models, they were not as effective as they could have been given the changes in the market, given the changes in the environment, given the changes in your ये जो कहते हैं technologies. So therefore we wanted something different. अब क्या हुआ, आपकी प्रोसेस एवोल्यूशन हुई, एंड इसके अंदर क्या होता है, वी आर स्ट्रक्चर्ड टुडे बाय हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, एज वी एडेड प्रोडक्ट्स वी एडेड फंक्शनल स्टोव पाइप्स। Processes in organizations have never been designed in the first place. वो जैसे जैसे आपकी नीड होती जाती थी हम वैसे वैसे अपने processes को डेवलप कर रहे थे, but it was not basically कि आप पहले process को डेवलप कर रहे हो और उसके बाद आप उसको you are giving the right product. What we were doing was कि जी हम products ऐड करते थे और हमारा process different हो जाया करता था। अब री-इंजीनियरिंग को अगर हम डिफाइन करें, प्रोसेस को हमने देखा, री इंजीनियरिंग को अगर हम देखें तो री इंजीनियरिंग इज बेसिकली द फंडामेंटल रीथिंकिंग. It's not just the thinking, you are again rethinking, and the radical, as I use the word, there is no incremental changes, but it's a radical redesign of the core business processes to achieve dramatic improvements in critical performance measures like quality, cost and cycle time. और यही वही, if you are looking at the source right at the end, उसमें है आपका
Hammer, Michael Hammer, who actually gave this concept of re-engineering the corporation. ये 1990s के अंदर आया था, 1993 के अंदर this was published. Now, given कि business process re-engineering is a very interesting concept, लेकिन हम इसको confuse कर जाते हैं. Let's first understand कि कौन सी चीज़ें business process re-engineering नहीं है. What is not BPR? Automating. आपने मशीनें बहुत ज़्यादा लगा दी हैं and all that stuff, that is not BPR. हम इसको कहते हैं business की language में paving the cow paths. Automate poor processes, कि जो processes पहले नहीं अच्छे perform कर रहे थे, आपने उनको automate कर दिया, आपने कहा जी वाह, I have done re-engineering. No, that's not BPR. Downsizing, लोगों को निकालने लग पड़े. Doing less with less, ठीक है. Cut costs and reduce payrolls, that is not BPR. Then चेंज, जो हम बात कर रहे थे कि जी पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स थे और किस तरीके से बिजनेस मॉडल्स ग्रो किए, उसमें ये आपके 4 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 वाज योर ऑटोमेशन. वी थॉट कि भी ऑटोमेशन कर लो एंड that's business. No, that's not. Then we did rationalization of procedures, then we did re-engineering. और अब क्या है, आपका paradigm shift है. अब risk और return अगर आप देखें, on the horizontal axis you are taking the return, on the vertical axis you are taking the risk. और जैसे जैसे आपके ये paradigms increase होते जा रहे हैं, आपके production front के increase आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके वो improvement आ रही है organization के अंदर. Now what is exactly automation? Automation refers to computerizing the processes to speed up the existing task. अब वही काम जो कि एक पहले human being कर रहा, वो machine करना पड़ती है, and it improves the efficiency and the effectiveness of the process. So that is basically automation. Rationalization of procedures क्या होता है? It's basically refers to streamlining of standard operating procedures, eliminating obvious bottlenecks, so that automation makes operating procedures more efficient, and it improves efficiency and effectiveness. अब आ जाता है आपका BPR. BPR क्या करता है? It's basically the radical redesign of the business process. क्या आप like totally revolutionize कर देते हैं. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? Our aims is number 1 to eliminate repetitive paper intensive bureaucratic tasks, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है, आपके overheads highly increase हो जाते हैं, ठीक है. आपकी costs इसमें क्या हो जाते हैं? significantly reduce होती हैं, और आपके product की या आपकी service की quality remarkably improve हो जाती है. और अब paradigm shift क्या होता है? Paradigm shift refers to more radical form of change where the nature of business and the nature of organization is questioned. It improves the strategic and improves the strategic standing of the organization. Now, what exactly is re-engineering then? It is obliterate what you have now and start from the scratch. You stop. जो आपने satisfy हो रहे हैं कि my business model is perfect, उसको छोड़ दें. Put a full stop on it and then start from the scratch. Transform every aspect of your organization. ये भी Michael Hammer कहता है कि this is basically re-engineering. अब Gordian Knot, all of you have is known. It's basically वही हम BPR को हम Gordian Knot के साथ भी sometimes करते हैं. It's basically a Greek myth, जहाँ पे क्या कहते हैं, Greek legend है. When nobody could untie the knot tied by King Gordius of Phrygia, तो इन्होंने क्या किया? That many people tried to untie the knot, but nobody succeeded until. Now you see in the slide कि जी वो until के बाद किसने इस tie को इस knot को untie किया था? That was basically Alexander the Great. And the legend starts कि जी it was basically a poor farmer who came into this area, और oracle ने कहा हुआ था कि जी whoever comes on this thing, he will be the king of this place of Paragia. तो ये वाला मौसूफ आते हैं. उसके बाद ऑरेकल ने एक और की हुई थी कि जी जो भी इस नॉट को अब खोलेगा, ही विल बी द किंग ऑफ द एशिया, किंग ऑफ द होल
at a bigger spectrum, and that was Alexander the Great. But you have to untie it. ये जो आप satisfy हो जाते हैं, you are just keeping the business the way it is, you cannot work like this. So आपको वो सब कुछ खोल के you have to start from the scratch. So BPR है, business का हमें पता है. Process क्या होता है? A process is simply structured, measured, set out activities designed to produce a specific output for a particular customers or market. और ये Davenport कहता है, Thomas Davenport, a very famous celebrity in corporations. अब इसके characteristics क्या होते हैं process के? It is a sequencing of work, its beginning and an end. उसके बाद आपके clear well defined inputs होते हैं और outputs होते हैं. Then how the work is being done, आपके process की ownership ली जाती है और आपकी जो performance है उसकी meaningful होती है और उसको measure किया जा सकता है. These are different characteristics of your process. Then comes कि आपकी dimension and type क्या होती है in terms of your process. अब क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी के अंदर आपके तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज योर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी, नंबर टू इज योर इंटर फंक्शनल एंड नंबर थ्री इज योर इंटर पर्सनल. इंटर ऑर्गेनाइजेशनल का फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जब आपको किसी सप्लायर से ऑर्डर आता है, दैट इज बेसिकली योर इंटर organizational. Interfunctional is when you are actually developing a new product, ठीक है, और interpersonal is that you approve a new bank loan, ठीक है. अब इसके अंदर that is basically organizational entity. Coming on to your number two is your objects. Objects क्या हो सकते हैं? दो किस्म के होते हैं. One is your physical, one is your informational. Physical में होता है when you are manufacturing a product, for example, and informational के अंदर होता है for example you are preparing a proposal. उसके बाद activities आपकी कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी operational होती है और एक आपकी managerial होती है. ऑपरेशनल में an example would be filling a customer form और managerial में होता है developing a budget. Now processes क्या होते हैं? They're often cross functional, ठीक है. Manage the white space on the organizational chart, ठीक है. This is basically process. और हम क्या कर रहे हैं? आपके ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आप देखेंगे स्लाइड के अंदर और उसके अंदर देख रहे हैं डिफरेंट चार्ट्स हैं एंड बेसिकली हम उनको क्या कर रहे होते हैं? कनेक्ट कर रहे होते हैं. तो आप एक सीक्वेंस दे रहे होते हैं कि जी आपका मार्केटिंग से जाएगा और आपका यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऑपरेशन में जाएगा, फिर फाइनेंस में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा, फिर ऑल दैट. अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली डेवलपिंग द प्रोसेस. नाउ वी कैन नॉट इम्प्रूव और मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, but we can increase the output quality and customer satisfaction as well as reduce the cost and cycle time of a process to improve it. अब process orientation क्या होता है? Process orientation is basically your key to your business process reengineering success. इसके अंदर हम क्या कहते हैं? Remove the stovepipe functions. Stovepipe functions वो होते हैं which are not adding value to your business. They are just the overheads. And focus on cross-functional process redesign. Link activities, functions and information in new ways to achieve breakthrough improvements in cost, quality and timeliness. ये तीन variables हैं. अब what we have seen is that BPR has actually achieved a dramatic improvement. Ford, the car company, reduced its account payable department by 75%. Bell Atlantic cut the cycle time for installing carrier services for customer from 15 days पहले उसको लगते थे, बाद में उसको 3 days लगे जब उसने BPR किया. IBM, the credit company, reduced loan application turnaround time from 6 days, 6 दिन लगते थे और उसको 4 घंटे पे ले आया. While loan applications increased by 100 times, no personnel was added. लोग नहीं ज़्यादा उसने add किए थे. Now, what are the benefits of your re-engineering? ये Deloitte, it's a consultancy firm, उसने 1993 के अंदर जब ये देखा BPR की परफॉर्मेंस को, they came up with these benefits. उनका जी सबसे ज़्यादा आपके सेल्स रेवेन्यू आपके इंक्रीज़ होते हैं, आपकी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपकी कंपेटिटिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है, then it reduces the cost, it improves the quality, आपके प्रोसेस की टाइमलीनेस इंक्रीज़ हो जाती है and you have a better customer service. Reengineering for achieving strategic goal. अगर हम मैनेजरियल की तरफ देखें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स चॉइस फॉर अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स. अब वो क्या क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा अगर आप ब्लू वाले को देखो, सो दैट इज़ री-इंजीनियरिंग, 88% री-इंजीनियरिंग. उसके बाद फिर वो कम होता रहता है कि ऑटोमेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग. सो 88% ऑफ द पीपल सेड कि जी हमने किस पे करना है, अगर हमने स्ट्रेटेजिक गोल करना है तो लेट्स गो फॉर BPR.
अब BPR के मैंने एग्जांपल से पीछे बताया, बट दिस इज लिटिल बिट बेटर, दैट इज के फोर्ड ने क्या किया था, अकाउंट पेबल्स के अंदर BPR किया, म्यूचुअल बेनिफिट लाइफ ने न्यू इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी एप्लीकेशन के अंदर लेके आए, कैपिटल होल्डिंग कोऑपरेशन ने कस्टमर सर्विस प्रोसेस को इम्प्रूव किया, टैको बेल ने कंपनी वाइड BPR किया था। टैको बेल इज दैट फूड चेन। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं, व्हाट एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट द रीइंजीनियरिंग एग्जाम्पल। Over here you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 people are standing and let's say they are in a bank. Our cash lane no more than 10 items. ठीक है, ये जो है we are not in a bank, rather we are in a departmental store, और एक ही लाइन है जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जी इस वाली लेन पे no more than 10 लोग हों। अब ये जो मौसूफ खड़े हुए हैं साइड पे, he is actually thinking which line is the shorter and faster. It's a very common thing that whenever you go to departmental store आप कहते हो कि जी मैं कौन से वाले पे जाऊं और लाइन कौन सी वाली मैं यूज़ करूं। ठीक है, जो भी सबसे छोटी लाइन होती है आप उसमें चले जाते हैं। हाउ डू वी री-इंजीनियर द प्रोसेस। आपने ये सारी विंडोज़ लगा दी और आपने सारे लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दिया। 1 queue फॉर मल्टीपल सर्विस पॉइंट्स, मल्टीपल सर्विस स्टेशंस, ये दो आपने कर दिए और आपने टोटल, पिछली वाली साइड में दिखाऊं कियोस आपको लग रहा है, इधर खड़े हुए सारे लोग खड़े हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। इसमें क्या कर दिया, यू हैव री-इंजीनियर्ड द प्रोसेस, क्या आपने कहा जी सारे एक जगह आप लाइन बना लें, जो क्यू सबसे पहले, जो सेंटर सबसे पहले फारग हो जाएगा अगला बंदा उस पर चला जाएगा, नो इश्यूज, लाइक पीपल आर हैप्पी विद दिस एंड इट गिव्स अ वेरी हाई आउटपुट। एंड अगर आपने इसकी प्रैक्टिकल सेटिंग देखनी है, दैट आई वुड से कि इफ यू आर इन दुबई एयरपोर्ट, that works out. If you are there in USA, that works out. If you're there to buy the ticket, if you're there in a bank, यही काम चलता है। यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में 4 काउंटर्स करते हैं, 4 लाइनें लगी होती हैं। इन्होंने क्या किया जी, एक लाइन आप लगाओ और जो काउंटर जैसे फारिग होता जाए एंड यू डू इट, very simple, very easy. इसी तरह there was you go in the morning and you say कि जी आज नाश्ते का प्रोग्राम है and you think कि जी मैं जल्दी से आ जाऊँगा, and the problem is कि there is a long rush. I'm not even going to say it's a queue, it's a long rush of people and everyone is asking, telling their menu कि जी मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने ये चीज़ लेनी है, and you feel वो जैसे कहते हैं ना, आप एकदम अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि भी मेरी बारी नहीं आएगी, एंड दिस पर्सन केम आफ्टर मी एंड ही हैज़ टेकन द ऑर्डर। अब क्या करें, व्हाट कैन बी द BPR? आई वाज इन दिस दिस वाज अ हलवा पूरी शॉप, एंड व्हाट दे डिड वाज कि द मोमेंट एनीवन वुड कम एंड ही वुड से मैंने ये चीज़ लेनी है, ही वुड गिव हिम अ नंबर. He would say, not a number, he had a register and he will ask your name कि जी डॉक्टर सलमान ये चीज़ लेनी है, और उन नंबर्स आपके लगते जाते थे। जैसे जैसे आपका रजिस्टर पे नंबर एंटर होता जा रहा है वैसे वैसे वो एंट्री होती जा रही है जैसे आप उसको बताते हो। नाउ व्हाट हैपेंड कि जी अब चाहे कोई पैसे जल्दी दे दे, कोई आपके बाद आया है उसकी बारी आपके बाद ही आएगी, उसकी बारी आपसे पहले नहीं आनी। A very simple business process reengineering. लाइन अभी भी नहीं लगी हुई इस शॉप पे, बट एवरीवन इज स्टैंडिंग पेशेंटली, क्योंकि उसको नजर आ रहा होता है रजिस्टर के ऊपर कभी अच्छा उसकी बारी आ गई, मेरा अब नंबर आने वाला है, क्योंकि उसी को वो देते हैं। इट इज़ नॉट दैट समवन इज इन एन इमरजेंसी, या किसी ने पैसे वो वाकफियत किसे कह दिया कि जी जमील भाई मुझे पहले अब दे दे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो देयरफॉर BPR के अंदर आपने क्या कर दिया, प्रोसेस को टोटली रेवोल्यूशनाइज। उनका एक रजिस्टर था, इन्होंने बैंक्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स या एयरपोर्ट्स पे इन्होंने क्या कर दिया जी, एक ही लाइन लगाएं, जो कि स्टॉक फारग होता है वहाँ पे चले जाएं, नो वन फील्स हैव एनी प्रॉब्लम एंड एवरीवन सेज कि जी मेरा इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी, मेरा इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि जो भी विंडो खाली होगी मेरा काम वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन BPR? Some of the principles is get organize around outcomes, not the tasks. From the previous example, you can easily see कि इन्होंने outcome पे देखा था, ठीक है, not the tasks. Have those who use the output of process perform the process. Then subsume information processing work into the real work that produces information. Your information is highly important. Treat geographically dispersed resources as though they were centralized. ठीक है, resources को इस तरीके से देखें कि वो as if they are centralized. Link parallel activities instead of integrating their results. And
put decision points where work is performed and build control within the process and capture information once and at the source. एक दफ़ा information, बार-बार duplication of information ना करें. Then these are the derived principles. Redesign process steps such that they are performed in a correct order. Combine several processes step into one. हम क्या करते हैं, हम steps को क्या कर रहे थे, minimize कर रहे थे, कम कर रहे थे. Like one window operation अब कर रहे हैं. आपने जो 4 लोगों के पास जाना है, आप एक ही window पे चल रहा है. हमारा जो classic case है, we can actually have this business process reengineering at Nadra or at the airport, not at the airport, at the passport office. Like आपने इस विंडो से जाना है, इस विंडो से जाना है, कहीं पे क्यू लंबी हो जाती है क्योंकि वो तस्वीर खींचने वाला बहुत टाइम ले रहा है, और कहीं पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन होनी है, जो लास्ट आपके मौसूफ बैठे होते हैं, ही इज़ बिजी इन टेकिंग टी एंड योर थिंग्स. यही अगर आपके पास वहाँ पे एक ही डिफरेंट विंडोज़ हों जो कि सारे सिमिलर काम मल्टीटास्किंग कर सकते हों, एक बंदा जाए जैसे जैसे जाता है उसका एक ही विंडो पे चाहे 20 मिनट वहाँ पे लगें, बट हिज वर्क इज़ फिनिश्ड. You might have seen that in the embassies, at the US embassy that I've seen, कि जी आपके you are sitting in the hall, आपकी 10 विंडोज़ काम करनी है, हर विंडो पे आपका कोई ना कोई नंबर आ जाता है, and you go to that particular window and you can say कि जी मेरा नंबर आ गया है, ठीक है. And that's another classic example of your BPR. Now number 2, आपने अपने प्रोसेस को क्या करना है, पैरेलल उनको डिज़ाइन करना है. wherever possible आपका जो वेटिंग टाइम होता है बिटवीन द 2 टास्क, उनको क्या करें, कम कर दें या उनको एलिमिनेट ही कर दें. Processes may have multiple versions. Remove complex exceptions and special cases. Complex चीज़ों को आप निकाल दें. And then empower the human potentials. Give frontline workers the responsibility to make decisions. क्योंकि अगर आपने frontline worker को decision making ना की, वो फिर जाके जी मैं बॉस से पूछ के आता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, and again the time is going to be wasted. Empower your employees. वो हमने पीछे पढ़ा था, but यहाँ पे it's more important. And provide mechanism in process to encourage individual, team and organizational learning. कि आपकी साथ-साथ learning हो रही है. Now what this Jan Calzin कहाँ का है, he is basically जो आपका Scandinavian Airlines है, इसका CEO, and what he says कि BPR is not automation, it is informating. Informating is an individual without information cannot take responsibility, and an individual who is given information cannot help but take responsibility. Now, business process reengineering के अंदर there's one important thing, that is reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed. And we have to take keep in mind that when this concept is working, it is completely revolutionizing the whole process. I will again read that concept, that it is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed. अब इसके अंदर जो आपके keywords हैं, जो 3-4 हैं, वो आपने देखने. Number 1, that's your fundamental. Now what do you mean by fundamental? It's basically why do we what we do. Why do we, हम क्यों करते हैं और हम क्या करते हैं. Why do we and what we do. Now इसके अंदर वो कहता है ignore what is and concentrate what should be. This is basically the fundamental thing. ठीक है. Why do we and what we do. Number 2, वो कहता है जी ignore what is, rather what should be. Number 2, radical. जब हम word radical का करते हैं, मैंने वो word use कर रहा हूँ, revolution use कर रहा हूँ, basically what we are looking at कि business reinvention versus business improvement. Improvement is always incremental. Reinvention is something out of the box. Then dramatic, उसी definition के अंदर dramatic use हुआ था. Reengineering should be brought in when a need exists for heavy blasting. ठीक है. कब reengineering आपको करनी चाहिए?
ड्रामेटिक कब आपको होना चाहिए? जब कंपनीज क्या हो, डीप ट्रबल में हो. नंबर 2, कंपनीज दैट सी ट्रबल इज कमिंग, या कंपनीज आर इन द पीक कंडीशन, तब आपको क्या करना है? ड्रामेटिक चेंज. आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंजेस के साथ बिजनेस नहीं कर सकते. नंबर 2, बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस, पहले हमें प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी. अब बिजनेस प्रोसेस को वो क्या कहता है? इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक्स वन और मोर काइंड्स ऑफ inputs and create output that has a value to the customer. That is done. Now let's work on BPR and the organization. After talking about the different terms, जो कि हमने उस definition को deconstruct किया, now let's talk about के BPR and the organization कैसे respond करेगी. We have already talked about this concept, but why I'm focusing on, क्योंकि most of the people confuses it कि जब मैं if you talk to the managers, let's do the business process reengineering, so what they start doing is वो automation करना शुरू कर देते हैं. That is not correct. That is not BPR. They start doing the downsizing, expenditures को काम करना पड़ता है. Again, that is not. वो outsourcing करते हैं. ठीक है? Now this is a new term that is coming out. They pay another company to provide services. A company might not otherwise have employed its own staff to perform. Outsourcing is readily seen in the software development sector. So that is not business process reengineering. और फिर then वही जो हम क्वालिटी के अंदर पढ़ते रहे हैं, there is continuous improvement. Again, those are incremental changing. जब आप existing processes के अंदर continuous improvement कर रहे होते हैं, emphasize on small and measurable refinements to an organization's current processes and systems. Continuous improvement origins and derived from the total quality management. और अभी आगे हमने जो next पढ़ना है, that would be Six Sigma. So again, that is not BPR. So reengineering and continuous improvement के अंदर क्या क्या similarities हैं? Do not confuse it. Similarities क्या हैं? On the basis of analysis, कि जी दोनों जब एनालाइज करते हैं, दोनों प्रोसेस को एनालाइज कर रहे होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दे आर दोनों की जब परफॉर्मेंस को वो देख रहे होते हैं, द मैकेनिज्म्स आर वेरी रिगरस. जो कंट्रोल्स वगैरह वो एस्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द और इन ऑर्डर टू मेजर द परफॉर्मेंस. नंबर 3 इज योर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट होता है. बिहेवियरल चेंज दोनों के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट होता है. और जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, देखें टाइम इज अ कॉस्ट. ठीक है? वी कांट जस्ट एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट के जी के टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इट इज़ नॉट एक्चुअली इनकरिंग द कॉस्ट. सो टाइम अगर उसमें लग रहा है, दोनों में सब्सटैंशियल टाइम रिडक्शंस होते हैं. मे इट बी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और मे इट बी री इंजीनियरिंग. देन लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस. रिमेंबर दैट कि जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करें, इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स TQM और सिक्स सिग्मा आ रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ चेंज जो है आपका in your BPR, that is radical, but the level of change in your continuous improvement, that is incremental. Over there we are talking about 10 times, 20 times. Over here we are talking about 10%, 5%. So that is less. The starting point, हमारा जो BPR होता है, that is always a clean slate. You start from zero. You can't just say कि जी एक process चल रहा है और आपने उसके अंदर improvement कर दिया. That is not business process reengineering. But when you are talking about continuous improvement, तो आप existing process के अंदर change लेके आते हैं, and that is always small one. Then participation. अगर आप बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग को देखते हैं तो दैट इज ऑलवेज टॉप डाउन, यानी ऊपर से टॉप मैनेजमेंट की अगर है आपकी कमिटमेंट है तभी आपका BPR सक्सेसफुल होगा. अगर टॉप मैनेजमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, BPR कभी भी नहीं होगा. बट इन द इंक्रीमेंटल चेंजेस, क्योंकि आप लाइन स्टाफ के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं और आप वहाँ पे इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, सो दैट इज ऑलवेज अ बॉटम अप, वहाँ से ऊपर की तरफ चेंज आता है. देन इन टर्म्स ऑफ योर टिपिकल स्कोप, द टिपिकल स्कोप इज ऑलवेज इन BPR, it's very much cross-functional, it is very much broader. But अगर आप इसको देखते हैं continuous improvement के अंदर, तो वहाँ पे आपका broad नहीं होता, it is very narrow and it is just working within the functions. Risk, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है BPR में. डोंट थिंक कि BPR फेलियर्स नहीं है. BPR में कई ऑर्गेनाइजेशन करते हुए भी फेल हो गई हैं. एंड जो यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि incremental changes are taking place, so that's why it is it's very low. The risk is low in continuous improvement. Primary enabler वहाँ पे जो होती है आपकी information technology होती है. That's why मैंने पीछे कहा कि automation is not BPR, but people confuses them. लेकिन जो basically जो change लेके आ रहा है, that is basically your information technology. और यहाँ पे आप continuous improvement के अंदर आप statistical
टूल्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। द चेंज इन BPR इज कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल, जबकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में इज बेसिकली कल्चरल चेंज आपका आता है। सो रिमेंबर दीज टू चेंजेस सो दैट व्हेनेवर एनी टास्क इज गिवन टू यू, ओके, लेट्स गो फॉर सम रीस्ट्रक्चरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास 2-3 टूल्स हैं, आइदर यू कैन यूज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और यू कैन यूज दिस BPR। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इनके दरमियान सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। सो प्रोसेस की हम डेफिनेशन कर सकते हैं, आई विल स्किप इट। अब बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? इट्स लॉजिकल रिलेटेड टास्क जो कि फर्म्स क्या करती हैं, अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से यूटिलाइज करती हैं कि जो मेरे कस्टमर की नीड है वो पूरी हो जाए। वाई री-इंजीनियर? नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जी BP तो हो गया, नाउ लेट्स टॉक टू द R पार्ट कि हम री-इंजीनियर करना क्यों चाहते हैं। Because of 2 factors. Number 1 is your customers and number 2 is your competition. Customers में क्या होता है कि customers are always demanding. Customers need change. Customers are always looking for improvement. Customers are always looking for more satisfaction from the product. I was not happy with I1. I2 आया, I3 आया, I4 आया, I6 आया, now they are working on iPhone 7, ठीक है। So customer is always demanding कि जी मुझे प्रोडक्ट के अंदर improvement चाहिए। Number 2, customer goes for sophistication, ठीक है, आपकी look sleek होनी चाहिए। अगर आप if you compare I4 with an I6, तो I6 is much more sleeker, ठीक है, it is much more। Samsung को आप देख लें, much more। अगर computers को उठा के देख लें, desktops, अगर पुराना वो TV वाला आया करता था, now they are looking for more sophisticated look। और उसके बाद जो कस्टमर की नीड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ वो जो लैपटॉप्स आए थे शुरू में, लैपटॉप्स अभी भी लैपटॉप्स का साइज बड़ा है, लेकिन एक स्मॉल लैपटॉप्स आ गए क्योंकि कस्टमर की नीड चेंज होगी। ही हैज टू ट्रैवल, ही डजंट वांट टू कैरी अ बिगर लैपटॉप। अगर तो ही इज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड ही इज ऑलवेज ट्रैवलिंग, सो ही प्रेफर्स अ स्मॉल टच पैड काइंड ऑफ थिंग व्हिच एक्चुअली केटर्स टू हिज नीड्स। सो इसकी वजह से आपको क्या करना होता है, अपने पूरे बिजनेस को रेडिकली चेंज करना है। नंबर 2, आपकी मार्केट के अंदर you are not the sole player, you are not the only monopoly guy over there who has a 99% market share. Even companies like Microsoft, they are also having changing a lot of policies. I have been in the previous lectures, I have been talking about how Satya Nadella is bringing changes in the organization as compared to your Bill Gates, yeah? So therefore आपका जो कंपटीशन होता है वो भी आपको पुश करता है कि ओके गो फॉर द री-इंजीनियरिंग। एंड उसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन आपका लोकल भी है विद योर डोमेस्टिक प्लेयर्स, और अगर आपकी इंटरनेशनल कंपनी है देन यू हैव कंपटीशन विद द ग्लोबल कंपनीज, विद द MNCs। सो जहाँ पे नाइकी है वहाँ पे रीबॉक है, वहाँ पे एडिडास है, ठीक है, जहाँ पे पेप्सी है वहाँ पे कोक भी है, ठीक है। सो वहाँ पे आपको कंपटीशन आपको फोर्सेस यू कि मैं कुछ ऐसे बिजनेस प्रोसेस लेके आऊँ दैट मेक्स मी डिफरेंट, दैट बैंक्स मी ऑन माई नीश, वो जो है मेरी कैपेबिलिटीज उसके ऊपर मैं करता हूँ, वो आई कैन बी ऑन द टॉप। मैकडोनल्ड्स भी है, टैको बेल्स भी है, KFC भी है तो सारे फास्ट फूड, पिज्जा हट भी है। सो हर कोई अपनी सर्विस को इंप्रूव कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आ रहा है, अपने स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। इफ यू रिमेंबर मैंने वो आपको बताया था मैल्कम बैलरिज अवार्ड्स आ रहे होते हैं, जहां पे एक आम जो बेल बॉय है, जिस तरह एक वो गेट पे एक आदमी खड़ा था, उसकी पॉकेट में उन्होंने $1000 रखे होते हैं कि जी इफ योर कस्टमर इज अनसेटिस्फाइड, उसको उसकी नीड आपने उसी वक्त सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कंपटीशन इज एक्चुअली फोर्सिंग यू टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ कस्टमर डिमांड्स, लेट्स गो इन डिटेल दैट कस्टमर डिमांड्स में क्या होता है, एक्सपेक्ट अस, ओह क्या वाओ आ गया। सो द कस्टमर डिमांड्स आपकी चेंज हो रही होती है। एक्सपेक्ट अस टू नो एवरीथिंग, ठीक है, टू मेक द राइट डिसीजंस, टू डू इट राइट नाउ, टू डू इट विद लेस रिसोर्सेज, टू मेक नो मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्ट टू बी फुली इन्फॉर्म्ड। ये है कस्टमर की डिमांड्स। देन कम्स वाई री-इंजीनियर, चेंज की आगे बात, दैट हम री-इंजीनियरिंग इस वजह से कर रहे होते हैं बिकॉज एक तो कंपटीशन का मैंने अभी ऑलरेडी जिक्र कर दिया, सेकंड इज और चेंज आ रहा है कि जी आपकी टेक्नोलॉजी इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट टेक्नोलॉजी आई हैड 1 month अगो वो आज चेंज हो चुकी है, ठीक है, और आपकी कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। बट व्हाई वी आर गोइंग फॉर बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग? नंबर 1, पीपल आर चेंजिंग, नंबर 2 टेक्नोलॉजी है आपकी, नंबर 3 आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ये जब चीजें हो रही होती हैं, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हमने इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग
technical and business environment, customer needs, and to achieve bigger performance goals. Southwest की एक दफ़ा मैंने एग्जांपल दी थी, Flextronics की मैंने आपको एग्जांपल दी थी. Now these companies survived क्योंकि इन्होंने changes को proactively they discovered them और उन्हें अपने business processes change करने लग पड़े. ठीक है. Now a traditional business जो कि छोटा एक कारोबार होता था और एक traditional business mechanisms होते थे, they are not working at all. आपके जो Zara है, जो एक Apple company है, that has forced itself कि जी आपने online shopping की facility देनी है लोगों को, because people are now preferring doing online shopping. आपका ये जो है निराला स्वीट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या कंपनी बन गई, दे टोटली चेंज देयर बिजनेस प्रोसेसेस. ठीक है. नाउ व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट री-इंजीनियर. एक तो है कि क्यों करना चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ा कि जी कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, कस्टमर की नीड्स हैं, उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके बाद आपका कंपटीशन आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स वी नीड टू हैव बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which forces you not to re-engineer. Now what are those factors? Number one, complacency. कि जी मैं एक अपने कंफर्ट जोन में आ गया हूँ और मेरे बस काम चल रहे हैं, एंड आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट. क्योंकि अगेन इन BPR you have to start from the scratch, you have to start from the zero. Then there is always a political resistance, and this political resistance is not कि मियाँ साहब या PPP आपको रोक रहा है. Basically the resistance is basically your organizational. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन पीपल वांट चेंज बट दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज. ठीक है. सो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आपको हो रही होती है. देन ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में नई डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं, एंड लास्ट कि जी लोगों को ऑलवेज फियर होता है, फियर टू बी फेलियर, कि जी फियर ऑफ अननोन, कि अगर हमने ये काम किया और ना चल सका तो हमारे सारे एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. नॉट बॉटम टू टॉप. देन परफॉर्मेंस. In terms of performance, BPR क्या करता है? It seeks improvement in number one cost, कि cost आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. It seeks कि जी आपकी quality क्या होनी चाहिए, increase होनी चाहिए. It seeks कि आपकी service क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और आपकी speed क्या होनी चाहिए, fast हो. वही 4 variables जो हमने पिछले lectures में discuss किए. But this is basically the pillars, or this is basically the functions of your operations management, जिनके साथ हमने अपनी operation strategy को क्या करना होता है, link up करना होता है. Then इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको ये सिंबल्स आने चाहिए. आपकी असाइनमेंट्स में गालबन ये होंगे. ठीक है. एंड व्हेन एवर यू आर गोइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज के आपके बिजनेस प्रोसेस क्या कह रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट सिंबल्स. जब ये आपको डब्बा नजर आए, स्क्वायर नजर आए, दैट इज बेसिकली एन एक्टिविटी. अगर इस जो सेकंड वाला आपको सिंबल नजर आए, दैट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट. देन अगर इफ इट इज दिस 4-sided बट इट्स लाइक दिस नंबर 3 शेप, दैट इज बेसिकली अ डिसीजन वेयर इट इज टू बी टेकन. और अगर वही थोड़ा सा इस तरह फ्लैट हो, दैट इज बेसिकली योर डेटा, योर इनपुट्स एंड योर आउटपुट्स. ऑन द अदर साइड अगर उस डब्बे के अंदर फर्दर आपने एक छोटा सा एक और डब्बा बनाया हुआ, द ब्लैक लाइंस दैट यू आर सीइंग, दैट इज basically or a predefined process. अगर start लिखा हुआ, we are starting the process. If we are talking about end, we are ending the process. And when we are talking about the arrow, that's basically representing the relation. Now let's see that how the flowchart work. If it's a circle, then it means that the continuation of the process at the same page, and an equal symbol with same number used in relation to arrow crosses relation arrow. ठीक है. ये अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप डॉक्यूमेंट उठा लोगे, एंड इफ यू आर सीइंग अ BPR वहाँ पे हुई है एंड द प्रोसेस आर वर्किंग, तो आपको ये सिंबल्स वहाँ पे नजर आएंगे. देन if this is the second symbol, that's basically the off page connector, that you go to the process is going to continue to the next page. And if this is like this, और इसकी shape आप देखें, it's not a pure square, इसका थोड़ा सा curve आ रहा है, that is basically the integration relation. A relationship to another module is identified and described. पहली वाली एक्टिविटी है, दूसरा डॉक्यूमेंट है, तीसरा डिसीजन है, फ्लैट चार्ट डेटा फाइल है, फिर मैनुअल डेटा है, देन दैट इज अ डेटा बेस फाइल्स, फिर रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन जो एरो है, सर्कल इज कंटिन्यूएशन, और ऑफ पेज कनेक्टर. नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर डेटा सिंबल्स. अब रूल्स फॉर डेटा सिंबल्स क्या हैं कि सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, यू यूज द स्टार्ट सिंबल. देन एक्टिविटीज मस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ब. आपने इट इज एन एक्शन, डूइंग वर्ड आपने रखना है. ठीक है. इट शुड नॉट बी अ नाउन और शुड नॉट बी एडजेक्टिव, इट शुड बी अ वर्ब.
एक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद डिसीजंस में आइदर यस रखें या नो रखें, मेक इट सिंपल, डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद क्रॉसिंग द लाइंस इज नॉट अलाउड, इस तरह काटे यानी मारने, बट यू हैव टू मूव इट फ्रॉम वन एरो टू अनदर एरो, एंड द एंड इज बेसिकली कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका एंड हो गया है। आई इट्स बेसिकली कंटिन्यूएशन सिंबल। उसके बाद अगर परचेज ऑर्डर है तो इसको आपने नेम द डॉक्यूमेंट, अगर ए लिखा हुआ है तो आपने इसको बताना है कि जी ये मेरा फर्स्ट कनेक्टर है, सेकंड कनेक्टर है, और अगर आपका पोस्टिंग ऑफ बोनस है तो दिस इज नेम ऑफ द डेटा एंड दिस इज द प्री डिफाइंड प्रोसेसेस। ये उसका एग्जाम्पल था। सो हर लैंग्वेज का या हर प्रोसेस को किस तरह कनेक्ट करना है, वी हैव सिंबल्स फॉर दैट इन BPR। Now, management version क्या है? Version management. For different versions of business process or data flow of some mandatory information must be on the flow chart. अब कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी होती है, चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑलवेज देयर। नाउ व्हाट इज दैट? नेम ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, कि किस बिजनेस प्रोसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, यू हैव टू नेम इट। देन व्हाट इज द यूनिक नंबर ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, उसके बाद आपका रिविजन नंबर होता है, फिर डेटा डेट ऑफ द लास्ट चेंज, कि कब आपने लास्ट टाइम उसको चेंज किया था, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, एंड पेज नंबर विद द टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। वो तो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था कि जी आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हाउ दिस व्हाट इट विल बी द स्कीम ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, द C's related to organization reengineering projects. Now the C's of organization reengineering, organization की मैं बात करूं कौन से हैं, और दूसरी साइड पे 4 C's of effective teams। पहला सी आ जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग कर रहे हैं कस्टमर्स, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट योर कस्टमर इज आस्किंग फॉर। नंबर 2 कंपटीशन, एंड नंबर 3 के चेंज आपने लाना है, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर ऑर्गेनाइजेशन री इंजीनियरिंग। इन टर्म्स ऑफ योर इफेक्टिव टीम्स, आपकी टीम के अंदर नंबर 1 फैक्टर आपका क्या होता है, इज योर कमिटमेंट, नंबर 2 इज योर कोऑपरेशन, नंबर 3 इज योर कम्युनिकेशन अमंग द टीम, एंड नंबर 4 इज योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एक साइड पे ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइड पे आपका टीम है, और ये आपके C's आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। नाउ हाउ डू वी मूव अहेड, किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले आपने जिस प्रोसेस को आप देख रहे हैं उसको आपने नेम करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड आइडेंटिफाई हु इज योर प्रोसेस टीम, किसने उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन अंडरस्टैंड कि आपका जो करंट प्रोसेस चल रहा है, रिमेंबर दैट डिपार्टमेंटल स्टोर एग्जांपल कि कौन सी लाइन शॉर्ट है, जब हम उसको देखें तो आपने उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। देन डेवलप एंड कम्युनिकेट विजन टू द इम्प्रूव्ड प्रोसेस, उसके बाद पहले डेवलप करें, इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट करें, उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्शन प्लान, और फिर आपने प्लान को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। नाउ नंबर 1 टास्क, इसी को अब हम 1 by 1 करते हैं कि सेलेक्ट द प्रोसेस एंड अपॉइंट द प्रोसेस टीम। अब इसके अंदर 2 क्रूशियल टास्क होते हैं कि पहले आपने देखना होता है किस प्रोसेस को आपने री इंजीनियर करना है, और उसके बाद इस री इंजीनियरिंग इनिशिएटिव को आपने जब इंप्लीमेंट करना है इसके लिए कौन सी आपने प्रोसेस टीम को आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोसेस है। रिव्यू द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है और आपकी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हर प्रोसेस में कोई ना कोई आपके कोर प्रोसेसेस होते हैं, सिलेक्ट दोस कोर प्रोसेसेस, क्योंकि हमने कोर प्रोसेसेस को देखना है, हमने जो साइड लाइन या उसके सपोर्टिंग प्रोसेस हैं उनको नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड योर कस्टमर नीड, एंड रिमेंबर do not assume anything, because once you are assuming you are going to make a false statement. We do not assume, we ask. Don't assume, rather ask. Get the information. उसके बाद select the correct path of change, and that is always because you are not working alone, you're working in a team. तो आपने उनके साथ डिस्कस करना है। Remember the assumptions can hide failures, ठीक है। assumptions आपने नहीं करनी, and competition and choice to go elsewhere. ask questionnaire, meetings करें कि how this process can be improved.
जब आप अपनी प्रोसेस टीम को अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंट द बीपीआर, हम उनको कहते हैं चैंपियंस, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द बिग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. आइडेंटिफाई कि इस प्रोसेस के ओनर्स कौन होंगे, बिकॉज ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट. इफ यू रिमेंबर जो मैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट और बीपीआर के बारे में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बता रहा था, तो इसके अंदर ओनरशिप होती है. एस्टैब्लिश द एग्जीक्यूटिव इंप्रूवमेंट टीम एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एग्जीक्यूटिव टीम. अब इसके लिए कौन से स्किल्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं? नंबर 1, कैपेसिटी टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. आपने सिर्फ उसको नहीं देखना, आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली देखना है. एंड दिस इज बेसिकली यू आर लुकिंग एट योर विजन, यू आर लुकिंग एट योर मिशन, वही वाली जो हमने पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था. एबिलिटी टू फोकस योर एंड कस्टमर्स, कि मेरे कस्टमर्स कौन है, आइडेंटिफाई देम, end customers, ठीक है. And what ability to challenge fundamental assumptions, because we are not making assumptions. And courage to deliver and venture into unknown areas, that we are not afraid and we are willing to take the risk. We can actually re-engineer the whole thing. Then core skills required, ability to assume individual and collective responsibility. जो टीम इसमें होती है, आपने उसमें responsibility की spirit जगानी है, that okay, they are responsible for the actions. Sometimes we use the consultants. अब consultants का क्या होता है? They are used to generate internal capacity. You hire an external person who is actually giving you some training. You are doing the skill enhancement to actually generate your internal capacity. It is appropriate when implementation is needed very quickly. क्योंकि जब आप क्या internally organization के लोग करते हैं, then it requires more time. Then ensure that adequate consultation is sought from the staff so that the initiative is organization led and not consultation driven. Consultant is there to facilitate you. He should not be taking over the whole process. It should be your organization staff जो कि आपने टीम पहले अपनी रखी हुई है, which is actually taking the responsibility, and they should be completely involved whatever consultant is doing. Control should never be handed to the consultant. Then अंडरस्टैंड द करंट प्रोसेस. अब इसके अंदर आपने अपना प्रोसेस ओवरव्यू डेवलप करें, देन क्लियरली डिफाइन द प्रोसेस, मिशन, स्कोप, बाउंड्रीज उसकी देखें, व्हाट आर योर बिजनेस एंड योर कस्टमर मेजरमेंट्स, और अंडरस्टैंड के व्हाट आर योर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. क्लियरली आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी आपने इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज करनी है, क्वालिटी करना है या आपका रीवर्क है, और डॉक्यूमेंट द प्रोसेस. उसके अंदर आप जब डॉक्यूमेंटेशन करें, ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स. नंबर 1 इज योर कॉस्ट, नंबर 2 इज योर टाइम, एंड नंबर 3 इज योर वैल्यू डेटा. Carefully resolve any inconsistencies. अगर कोई existing है तो new process, और अगर ideal है तो the process needs to be realistic. Develop and communicate vision to the improved process. Communicate it with all the employees so that उनको पता हो कि हमारे future का vision क्या है. Then always provide information on the progress of BPR initiative. सारों को timely feedback देते रहा करें, बताते रहा करें कि what we are actually doing, and demonstrate assurance that BPR initiative is both necessary and properly management, so they're managed, so that people have faith on your process team that whatever they are doing, it is basically for the betterment of the organization and for their betterment too. Promote individual development by indicating options are available. आपका जो स्टाफ है उसकी स्किल एनहांसमेंट होनी चाहिए. इंडिकेट एक्शंस रिक्वायर्ड एंड दोज रिस्पॉन्सिबल, टैकल एनी actions if any resolution required, and direct communication to reinforce new patterns of desired behavior. उसके बाद आपने क्या करना होता है? अपना एक्शन प्लान डेवलप करना होता है. इन एक्शन प्लान डेवलप एन इम्प्रूवमेंट प्लान. If you are just giving the same action plan, it's just like putting new wine into old bottles, right? That is not BPR. And appoint the process owners, simplify the process and reduce the process time. उसके बाद आपने क्या करना है? जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि हमने वो जो प्रोसेस, जो पेपर वर्क है, जो पेपर ट्रेल जो चल रही है, उसको हमने क्या करना है? कम करना है या टोटली एलिमिनेट करना है. Remove no value added activities. That is very necessary in your organization. May it be a service, may it be manufacturing. जितनी भी आपकी zero value addition की activities हैं, उन सारों को क्या करते हैं? Eliminate करते हैं. Don't bring them. उसके बाद standardize the process, automate the where possible. जहाँ पे automation possible है, where it is necessary, do it. ठीक है? Upgrade your equipment and schedule the changes. Construct the in-house matrices and targets. क्योंकि आपके स्टाफ ने वो करना है. So develop the schedule for them. Introduce firm a good feedback system. ठीक है? तभी आपको पता चलेगा that where are the caveats. ठीक है? And then audit. Keep auditing. ठीक है? अपना चेक करें.
Then comes the execution of the plan. In execution of the plan, what we are doing is you have to qualify या certify the process. कि जो process आपने establish किया है, the new process, that should be certified. उसके बाद जो periodic reviews उसके करते रहते हैं, how the process is going on. Then अगर उस process के अंदर problems आ रही हैं, which will come, ठीक है, because it's a human nature, the error is always there. So उसको क्या करें, timely action लें और timely feedback जो आपको मिलता है उसके ऊपर आपने necessary and immediate action लेना है. उसके बाद evaluate the change impact on business and on customers. और जो आपने business नया मॉडल लेके आए हैं, जो आपने री-इंजीनियरिंग की है, उस पर आपने फीडबैक लेना और उसका इम्पैक्ट देखना है कि आपके बिजनेस पे क्या हुआ है और आपके कस्टमर्स पे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है. एंड ऑलवेज बेंचमार्क द प्रोसेस, ऑलवेज सेट अप द स्टैंडर्ड्स कि जी दिस इज आवर मिनिमम रिक्वायरमेंट, इससे ऊपर हमने जाना है, उससे हमने नीचे नहीं जाना, ठीक है. एंड प्रोवाइड एडवांस टीम ट्रेनिंग, अपनी टीम्स को आपने ट्रेन करना है. Then comes your information technology and your business process re-engineering. इसके अंदर क्या होता है कि IT के बहुत बेनिफिट्स हैं. Technology has completely revolutionized the organizations. New York Times, a very good newspaper, but it has forced to bring it on web. BBC, ठीक है, TV channel, लेकिन इंटरनेट पे उसको लाना पड़ा. Lot of newspapers have to come on online, ठीक है, क्योंकि लोग अब टाइम ही नहीं, टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन करते हैं. So therefore, IT has actually revolutionized, actually changed the whole business models. It assists in terms of your business processes. It enables the product and service innovations. Innovation को वो flourish करती है आपकी IT. It improves your operational efficiency and it coordinates vendors and customers in the process chain. वेंडर्स को पता चलता था सप्लाई चेन में, जो आपके वेंडर्स हैं या जो आपके सप्लायर्स हैं, कि जी आपका वो मटेरियल ख़त्म हो रहा है. कस्टमर्स को पता चल जाता था कि भी ये वाली चीज़ अब इन्वेंट्री से ख़त्म हो रही है, सो वी शुड मेक अ नेसेसरी एक्शन और बाय इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इफ दे डोंट देन द मॉडल इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन. दैट्स व्हाट ज़ारा डू ऑलवेज, ठीक है. सो देयरफॉर IT आपके बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को स्ट्रेंथन करता है. इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स यू, इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट यू. Now coming on कि जी आपके बिजनेस प्रोसेस चैलेंजेस कौन से हैं. नाउ चैलेंजेस ये हैं कि प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन इज कॉमन, इट्स नॉट ट्रू, BPR इज नॉट, ठीक है. सेकेंड, द डिजायर टू चेंज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. द प्रॉब्लम इज कि हम चाहते तो हैं, पीपल वांट चेंज बट दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज. जब आप टोटली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज, लेट्स सपोज एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम कहते हैं कि जी पीपल आर नॉट कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या किया जाए. आजकल जी हमने बायोमेट्रिक है, थंब प्रिंट्स लगा दिए हैं, एंड डू यू नो इट इज सच अ पेन. पीपल थिंक दैट दे आर स्लेव्स, उनके घंटे काउंट हो रहे हैं. लेकिन अगर यही आप US में काम कर रहे हैं, मे इट बी वर्ल्ड बैंक और मे इट बी डंकन डोनट्स, आपका वो थंब इम्प्रिंट्स चल रहे हैं. पीपल आर ऑल टाइम, उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया भाई, ठीक है. सो डिजायर फॉर चेंज इज नॉट इनफ. देन स्टार्ट पॉइंट, द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज नॉट अ ब्लैंक स्टेट. हम जब प्रोसेस करते हैं तो हम यूजली मिडवे से अगला प्रोसेस BPR स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द जीरो पॉइंट. एंड देन कमिटमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस इज टू स्ट्रॉन्ग. जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहे थे, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू से, वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस सिस्टम दैट यू आर चेंजिंग यू आर ब्रिंगिंग इन द न्यू सिस्टम. सो यू हैव टू हैव a strong commitment. You need to have a strong conviction that if you are using the new kind of business model, it has its own benefits, it has its own advantages as compared to existing one. Because if it is not broken, why to replace it, right? Now, process under review is too big or too small. जो process होता है either तो बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है. That's why वो आपके BPR को implement करने में प्रॉब्लम आ रही होती है. Then reliance on existing processes too strong. We have already covered it. The costs of change seem to be too large. You think जी cost है. For example, मैं कहता हूँ जी अपने total हम processes को अब solar पे ले जाते हैं. The cost is very high. लेकिन long term benefits they are much more क्योंकि you are using the renewable energy. उसके बाद BPR isolated activity not aligned with the business objectives. Sometimes आप जो BPR कर रहे होते हैं, it is not aligned. आपने holistically अपने पूरे business को नहीं देखा. So you have to see कि how it, वही जब हम determine कर रहे थे impact को, that how it actually determines the impact on the business and on the customers. You have to see that it is aligned with your BPR.
Then about the allocation of resources, कि आपके resources कैसे allocate किए जाएंगे. उसके बाद टाइमिंग आपकी गलत हो सकती है, आपकी प्लानिंग गलत हो सकती है, so that may lead to the problem in your BPR. और उसके बाद keeping the team and the organization on the target. So आपके targets sometimes misplace हो जाते हैं. अब क्वेश्चन आता है, जब ये फेलियर्स आ रहे हैं, हम BPR को किस तरह सक्सेसफुल बना सकते हैं. In order to have a good BPR, number one, it should be accompanied with strategic planning. Here now what I'm doing is I'm aligning it with your strategic operations, ठीक है, which addresses the leveraging need of your IT and your competitive tool. Then you have to keep your customer as the heart of the body, ठीक है, keep your customer in the central part. उसके बाद it should be owned throughout the organization, और ये ना हो कि जी बाहर के consultants ने कह दिया जी हमने ये आपका BPR कर दिया, so it is done and now start implementing it. No, it's not going to work. You have to make it realize that every member or every employee is part of this process. So everyone has to be engaged into it and everyone should be taking the ownership of it. Then case teams must be comprised of both managers and those who are actually be doing the work. It should be a combination. The IT should be the integral part. ठीक है, information technology should be complementing it, it should be supporting your BPR. उसके बाद it should be sponsored by your top executives, because if it is not who are not about to leave or retire, क्योंकि अगर किसी का विजन है और अगले महीने वो रिटायर हो तो आपका BPR वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. Then it needs to have a timeline, it needs to have a timetable. Ideally from 6 months से लेके from 3 to 6 months के अंदर आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा चला जाता है then you are in the limbo situation. उसके बाद then it should be ignoring your corporate culture and it should be focused on your constant communication and your feedback. Now, ladies and gentlemen, coming on to the summary, re-engineering is basically the rethinking, it is basically the redesign of the business process to achieve dramatic improvements. It is actually emerged from the key management जो आपके traditional management model थे. As I said कि BPR को sometime हम substitute करते हैं as if it is a Taylorism के साथ है, but it's not. It's similar to that, but it's much more as compared to that. उसके बाद आपके जो rules और symbols हैं, they play an integral part in your BPR. And remember, my last वो जिसे कहते हैं scent for today's lecture is that never assume. I have seen people जो कहते हैं जी मैंने तो ये सोचा था, but you need to ask. ठीक है, because don't assume anything. Remember, BPR is a fundamental rethinking of business process. So अगर आपने assume किया और अगर आपने नहीं पूछा, then it is going to turn into a horrible nightmare. So therefore, do not make assumptions. Rather, make this re-engineering initiative on the basis of reality. Right? I will stop over here. And next time when we meet, we'll be more talking about Six Sigma. That would be a last point for our substitute strategy. Till then, have happy reading. I hope you are reading the book and enjoying the wonderful concepts, because it's a very nice book written. And till then, take care of yourself. Have a nice time. I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.